चलिए, so in a previous lecture we have discussed about the classes of coelentrates, right, or Cnidaria. Today we will be started with the new phylum, that is Ctenophora. Okay. This Ctenophora is, again, as we all know, that all the names of the phylums were Greek names, right? They should have some meaning. So the same Ctenophora is also a Greek word and it is also having a meaning, right? Ctenos means we have a comb-like appearance or a comb-like structure. Means comb-like, and phora means to bear, right? Phora means to bear. It means the organisms which bearing a comb-like structure, right? They were called as ctenophores. उन animals को हम क्या बोलेंगे? Ctenophores बोलेंगे. So this phylum was created by Esques Bolds, right? As you pronounce it, E is silent. It is also called as Shex Bolds, right? The scientist who created the phylum Ctenophora, जिन्होंने ये phylum create किया था Ctenophora, right? इसके अलावा चलिए, so let's talk about these ctenophores. The characteristic feature of the ctenophores, as the name implies, जैसे कि नाम implies होता है, they have 8 external ciliated comb plates on their body, right? इनकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होती हैं? अब plates is present externally, they are in 8 number, and on these plates a hair like small structure which we called as cilia are present. So such rows were called as ciliated comb plates. तो उन rows को हम क्या बोलते हैं? ciliated comb plates बोलते हैं. तो बेसिकली जो हमारे टीनोफोर्स होते हैं, इनकी बॉडी पर हमें क्या मिलती हैं? ये सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स मिलती हैं, जिनका नंबर कितना है? 8 है, और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है? सीलिया प्रेजेंट है, एंड दैट सीलिया आर द स्पेशलाइज्ड सीलियाज. दे आर नॉट लाइक अदर सीलिया, राइट? सो सीलिया, What is the special about their cilia? इनके cilia के बारे में क्या खास बात है? The arrangement of microfilaments or microtubules in this cilia is 9+3 arrangement. The normal cilia which we have in other animals, they have 9+2 arrangement. But here, in case of ctenophores, the cilia which we have is 9+3 arrangement. उनका जो arrangement है वो कैसा है? 9+3 arrangement है. Plus, what is again special about the cilia in these animals? और क्या special है? Here, as we all know, cilia is what? Cilia is a locomotory organ. Locomotory organ है. So here also it helps in locomotion. It helps in locomotion. और ये काहे में हेल्प करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है. बट व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट टीनोफोर्स? टीनोफोर्स के बारे में जो इंटरेस्टिंग थिंग है अबाउट द सीलिया, दे आर द लार्जेस्ट सीलिएटेड एनिमल्स व्हिच लोकोमोट विद द हेल्प ऑफ सीलिया. ये लार्जेस्ट एनिमल है जो क्या करते हैं? सीलिया की हेल्प से लोकोमोट करते हैं. अदरवाइज वी फाउंड द सीलिया इन अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम एंड ऑल दैट. बट हियर इन केस ऑफ टीनोफोर्स आर द लार्जर एनिमल्स as compared to sponges and coelentrates, right? They are modified organisms as compared to the other phylum. जो हमने इससे पहले phylum पढ़े हैं, ठीक है, उनसे तो modified हैं. So these are the largest animals
who having the cilia for the locomotion, जो locomotion कर रहे हैं काहे की हेल्प से, cilia की हेल्प से. So they are largest ciliated animals which locomote with the help of cilia, with the help of cilia, जो cilia की हेल्प से क्या कर रहे हैं, लोकोमोट कर रहे हैं. क्लियर होगी बात? सर इनका माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट का डायग्राम रख के आप दिखा सकते हैं. Diagram is very little the same as in case of we have seen the simple diagram, right? Here we have instead of 2 in the center it has 3, and all there are 9, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 and it is 9, and they all are connected like this with a central radius form, right, like this way. ठीक है, the structure was same, there is no difference, but instead of 2 in the center there are 3, so the arrangement becomes 9 plus 3. So this is the characteristic feature. ठीक है, cilia जो आपके arise होते हैं basal granule से, right? So ये basal granule से आपके originate होते हैं, but the arrangement of microtubules is 9 plus 3. लेकिन इनका जो अरेंजमेंट है cilia का वो कैसा है, डिफर है as compared to the normal cilia. जो हमारे normal cilia होते हैं उनके अंदर हमें 9 plus 2 अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है, but here in case of ctenophores the arrangement is 9 plus 3, and this support the locomotion for the largest body. क्योंकि जो cilia होते हैं they are very fine microscopic hair-like structures, right? And they promote the locomotion. और ये क्या कर रहे हैं, locomotion को promote कर रहे हैं, and the body of the organism is little large. समझ आई बात? तो उसको locomote करने के लिए the structure should be a little modified. So इसीलिए यहाँ पर जो cilia है वो क्या हो गया है, modified हो गया है into 9 plus 3 arrangement, 9 plus 3 arrangement में. क्लियर हो गई बात? चलिए इसके अलावा so this is the characteristic feature of ctenophores. तो ये क्या है, ctenophores का characteristic feature है the presence of 8 complates and they are ciliated. और वो complates कैसी होंगी, ciliated होंगी, plus इसके अलावा the arrangement in that cilia is 9 plus 3. If we talking about the body form, बॉडी फॉर्म की अगर बात की जाए तो बेसिकली दे आर स्फेरिकल इन शेप. इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होगी, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल इन शेप. इनकी जो बॉडी होती है वो स्फेरिकल होती है या सिलिंड्रिकल भी हो सकती है, एंड प्लस दे हैव टेंटेकल्स. और इनके पास क्या प्रेजेंट होती हैं, टेंटेकल्स हैं, बट निमेटोसाइट्स आर एब्सेंट. लेकिन निमेटोसाइट्स और न्यूक्लियोब्लास्ट सेल्स वर एब्सेंट. यहाँ पर टेंटेकल्स पर निमेटोसाइट सेल्स नहीं है, देयर इज नो निमेटोसाइट सेल्स प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स. क्लियर? Tentacles were there but nematocyte cells were not there as we seen in case of ciliate traits. हमने ciliate trait के केस में क्या देखा था, टेंटेकल्स थी, बॉडी थी, बॉडी की बाहर वाली एपिडर्मिस पे भी सेल्स थी, न्यूक्लियोब्लास्ट सेल्स, और टेंटेकल्स पर भी थी. बट हियर वी डोंट हैव अ सेल्स. यहाँ पर लेकिन हमारे पास सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं टेंटेकल्स पर. क्लियर हो गई बात? स्टिंगिंग सेल्स वर नॉट फाउंड. यहाँ पर स्टिंगिंग सेल्स हमें देखने के लिए नहीं मिलती हैं. तो स्फेरिकल है और स्फेरिकल बॉडी के ऊपर ही एक्सटर्नली क्या प्रेजेंट है, एक एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम्प्लेट प्रेजेंट है. लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम. ठीक है, इस तरह की बॉल लाइक स्ट्रक्चर और स्फेरिकल बॉडी. ठीक है, इट इज क्लियरली शोन इन योर एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया गया है इस तरह का, राइट, एंड इट हैज 8 complates.
राइट, एक्सटर्नली विजिबल, जो क्या है एक्सटर्नली विजिबल, लाइक दिस वे, एंड हेयर it has the tentacles like this, the body is like this, इस तरह से इनकी क्या होती है बॉडी होती है, spherical body है, और ये क्या प्रेजेंट है 8 comb plates were present, और ये जो comb plates है it is like this, suppose this is the comb plate, ये आपकी comb plate है, and on this comb plate on both the sides we have seen the cilia, right, and the cilia is arranged like this, इस तरह से cilia क्या होते हैं arranged होते हैं on the comb plate, and they are meant for the locomotion, और ये काहे में help करते हैं cilia, locomotion में help करते हैं, क्लियर हो गई बात। चलिए next, और very important again, बॉडी वॉल, बॉडी वॉल की अगर इनकी बात की जाए, सो अगेन इट हैज अ आउटर बॉडी वॉल, आउटर लेयर एंड अ इनर लेयर, आउटर लेयर एंड इनर लेयर, एक तो बाहर वाली होगी विच इज विजिबल टू अस, एक्सटर्नली एक्सपोज, और एक कहाँ होगी अंदर वालों को, ठीक है। सो देखते हैं, इफ वी ड्रॉ इट इन अ सेक्शन, इसी डायग्राम को, इसी एनिमल्स को, इफ वी सी, अगर इसको हम बाहर से देखते हैं तो ये एनिमल हमें कैसा दिखाई देगा, तो इट इज लुकिंग लाइक दिस, राइट, और बाहर से ही दिस स्ट्रक्चर, अंदर का जो स्ट्रक्चर, इट इज इजीली बी विजिबल, व्हाई इज इट सो, अंदर से कैसे विजिबल होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, वेरी गुड, द बॉडी इज ट्रांसपेरेंट, बॉडी कैसी है ट्रांसपेरेंट, बॉडी ट्रांसपेरेंट एंड समवॉट फ्लेक्सिबल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्ब जेली, they are called as comb jelly, or their shape is also looking like a walnut, so they are also called as sea walnuts, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, sea walnuts, and they are also called as sea gooseberries, और इनको sea gooseberries भी बोला जाता है, ठीक है, comb jellies। तो देखते हैं कैसे दिखते हैं अंदर से, like they have shown a structure like this, इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, which is goes towards inside, जो अंदर की तरफ जाता है, deep, and here it shows the pharynx, pharynx show करता है, right, and the tube, this tube is open up into the broad stomach, स्टमक होता है, ठीक है, एंड स्टमक लीड्स टू अगेन अ ट्यूब एंड इट ओपन्स इनटू द आउटर, राइट। सो दिस इज, वी हैव अ माउथ, here we have a muscular pharynx, muscular pharynx, right, and this is stomach, right, anus is absent, ठीक है, anus is not developed as a structure, opening is there, though opening is there, but this opening is not modified into anus, लेकिन ये opening anus में modified नहीं होगी, right, though they have opening, but this opening is not modified as the anus, so this one is the outer layer, तो ये तो बाहर वाली लेयर हो गई, this one the outer one, and here this one which lines
this cavity, the inner lining. So this one is the inner one. So this is the inner body wall. This is outer body wall and this is inner body wall. So because it lines the digestive tract or digestive tube, so that's why the inner lining or the inner wall is called as gastrodermis. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? Gastrodermis, right? And the inner one is a simple layer. ठीक है, ये कैसी है? Simple epidermis composed of a cells. Simple epidermis की बनी होती है जो बाहर वाली होती है, right? और कैसी है बाहर वाली? It is sensory. कैसी है? Sensory है, plus it has a specialized cells and that were called as coloblast cells. And these coloblast cells are adhesive in function. और ये function में कैसे हैं? Adhesive हैं. It means they are helpful in capturing the food. और ये food को capture करने में हमें क्या करते हैं? Help करते हैं. Clear हो गई बात? This gastrodermis is further divided into two layers. ये हमारी दो लेयर में डिवाइड हो सकती है, ठीक है? यहाँ पर एक तो हमें क्या मिलती है? In gastrodermis we have found, एक तो यानी अंदर की तरफ होगी और एक बाहर की तरफ होगी. तो दो यहाँ पर हमारी gastrodermis में क्या हो सकती हैं? लेयर हो सकती हैं, ठीक है? तो हमारी यहाँ पर जो ये वाली लेयर होगी, this is called as myoepithelial. ये कैसी होती है? Myoepithelial. Myo word is coming from the muscle. So this is somewhat like a muscular activity. It helps in the contraction. और ये काहे में हेल्प करती है? Contraction में हेल्प करती है. So that's why it is called as myoepithelium. And here we have a pigmented layer. And this actually pigmented layer is again a characteristic feature of ctenophores. Due to this pigmented layer, they emits light, and that property is called as bioluminescence. Right? So this property is called as bioluminescence. They emits the light. ये क्या करते हैं? Light emit करते हैं. ठीक है? Next, हैबिटेट कैसा है इनका? मरीन. वेरी गुड. दे ऑल आर मरीन. सारे कैसे हैं? मेराइन और पिलाजिक. कैसे हैं? पिलाजिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिलाजिक? फ्री फ्लोटिंग ऑन द सरफेस. सरफेस पे कैसे होंगे? फ्री फ्लोटिंग. फीड करते हैं कहाँ पर? ज़ूप्लैंक्टन्स पर. तो कैसे हैं? कार्निवोर्स हैं. सो दे आर कार्निवोरस. फीड ऑन ज़ूप्लैंक्टन्स. कहाँ पर फीड करते हैं? ज़ूप्लैंक्टन्स पर फीड करते हैं. दे फीड ऑन ज़ूप्लैंक्टन्स. ठीक है? दे फीड ऑन ज़ूप्लैंक्टन्स. क्लियर? इसके अलावा सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री प्लस दे आर डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक
एनिमल्स। कैसे एनिमल्स हैं? डिप्लोब्लास्टिक हैं। इट मींस दे ओरिजिनेट फ्रॉम टू जर्म लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। बट ड्यू टू द मॉडिफिकेशंस ऑफ दीज लेयर्स, some scientists were believed that they are triploblastic, right? Some scientists were still in controversial, ये भी topic controversial है still, ठीक है। Some says that it is triploblastic and some of the scientists were said that it is diploblastic. Clear? But at NCERT level we studied that these organisms are diploblastic organisms। ये organisms कैसे हैं? Diploblastics हैं। Next, very important property, they show regeneration, power of regeneration, regeneration की पावर को शो करते हैं, and pedogenesis, and they show pedogenesis। और ये क्या शो करते हैं? pedogenesis भी शो करते हैं। What is pedogenesis? Pedogenesis is when unfertilized egg, right, or larva shows sexual reproduction, or unfertilized egg is developed into larva directly without fertilization। बिना फर्टिलाइजेशन के जो एग है वो क्या हो जाता है? लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन दैट लार्वा शोज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो लार्वा क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज पीडोजेनेसिस। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? पीडोजेनेसिस बोलते हैं, जो हमें देखने के लिए मिलती है काय में? इन टीनोफोर्स। टीनोफोर्स में नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां देखने के लिए नहीं मिलता है। दे आर शो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सिर्फ क्या शो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, राइट? नेक्स्ट, द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है विद द लार्वल फॉर्म। लार्वल फॉर्म आती है, कौन सा लार्वा मिलता है? यस, विच लार्वा आमिर? हियर वी हैव अ साइपिड लार्वा, ठीक है। कौन सी लार्वा मिलती है? साइपिड लार्वा मिलती है, क्योंकि डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है। क्लियर हो गई बात? So indirect development. So this is, I think, all we have covered the important things about the ctenophores। तो ctenophora के बारे में यही हमारे पास क्या है? important information है। चलिए, so we will be started the next phylum, that is Platyhelminths, in the next video।